there's a very common refrain that we hear in the education community, at least in spirit, that knowledge is power. And this very idea that knowledge changes lives, and accordingly, we can change the world. I think that underpins everything that we do as educators. In fact, according to Albert Einstein, it is the supreme art of the teacher to awaken joy in creative expression and knowledge. It is also said that learning is a lifelong process. It promotes understanding, and when we understand something, it actually brings more satisfaction and joy than anything else. So it's very important that we teachers always strive to learn more and understand more. In fact, in the same breath, I'm tempted to quote yet another thinker here, and I quote, "True teachers are those who use themselves as bridges over which they invite their students to cross, and then, having facilitated their crossing, joyfully collapse, encouraging them to create their own." And I unquote. Now, having said this and having made a very humble attempt at putting the things in the right perspective, I, Dr. Seema Singh, would like to welcome you all to yet another expert talk. A very pleasant morning to one and all as we gather here virtually this wonderful morning to partake of yet another knowledge boosting session under the expert lecture series being organized by our institute under the able guidance and generous support of our worthy director, Dr. Rominder Kaur Randhawa, and of course, our ever supportive management. Let me take this opportunity of welcoming and introducing our esteemed resource person, Dr. Naresh Vats ji, who teaches at the Department of English, University School of Humanities and Social Sciences, Guru Gobind Singh Indraprastha University, Delhi. Well, Dr. Watts is a committed and a zealous academic who believes in the power of communication. He dabbles and engages with language on a daily basis, and primarily his areas of interest and research are literature, Indian aesthetics, cinema studies, and culture studies. He has a huge publication corpus in the form of books and research papers in national and international journals to his credit, and he has also shared his research findings at various conferences in India, Europe, and the United States of America. He has successfully supervised many MA, MPhil, and PhD degrees under his supervision. And well, Sir has also delivered around 15 keynote and invited addresses and chaired several conferences and symposiums. And I'd also like to add here some of the honors and the awards that he has received during the course of his distinguished career. Well, he's received the Best Researcher Award from the International Multidisciplinary Research Foundation India in 2017, the Distinguished Teacher Award from the International Multidisciplinary Research Foundation India in 2020, and Dr. Sarvapalli Radhakrishnan Best Teacher Award from Center for Professional Advancement in 2021. And these are just to name a few. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming our esteemed speaker who will be delivering a talk on the topic Understanding Communication and Role of Language today. And I'm sure all of us would hugely benefit from his valuable thoughts and insights today. So over to you, sir. The floor is all yours. So you'll have to unmute yourself. You'll have to unmute yourself. Yes, sir. It's perfect now. Again, I convey my gratitude, my best wishes, my respect to all my colleagues, especially Dr. Seema ji,
who invited me, and it's an honor. It's always I find it really pleasant to talk to our to talk among our own fraternity, because we talk to the students. We are always engaged with the students on everyday basis. But sitting together for a rather academic chit chat is always a good occasion. I take this liberty to call it an academic chit chat because uh, I don't think that I call it an expert kind of lecture, because we all are expert in some or other fields. I myself, being a non-expert in everything, because I doing so many things will make you a jack of all trades. So Not at all, sir. Not at all, sir. It's a pleasure to have you here with sir. when we were rather discussing, I and Seema, what should be the topic. So I thought, okay, let us take a very general kind of topic, because in technical classes mainly we have communication papers and normally communication theories and language and communication. But there is one anomaly here. Whenever we say communication or whenever we say language, I don't know by good or bad regions we mean English. So I really humbly disagree with the idea of academics here, because whenever we talk, even I am speaking in English because I'm supposed to speak in English. I don't know whether I can switch to Hindi in between, but I would love to. That Yes, is why. yes, sir. Please carry on. We would love it, sir. Let's make it a bilingual thing. And I totally second you on your thoughts about how communication is not about speaking only in English. It's about how well we, put across our ideas to someone. It could be in any language, sir. Because generally, whenever we talk of communication skills class, students take it as an English class, and we are supposed to be talking about grammar, English grammar, sentence building, enriching vocabulary, and in that enriching vocabulary and learning sentence building, we invariably we go to English dictionary, and we all, as we our generation mainly is overfed by Ren and Martin grammar. So that's really it has a nostalgic value also. I have a Ren and Martin which was probably read by my father. उसके पेज पीले पड़ गए हैं और वो काफी बीच में टूट जाते हैं when I open it. So generally I don't open it. I show it to my children that you are the third generation reading Ren and Martin. But anyway, I have one more thing. By humble request, if we could, those for those whom it is possible, we can, we can switch on our cameras, because it's always good to see faces. We have had enough of screen, in fact, due to COVID. So since it is online, so it will be good. Some of us will switch on our cameras so we can see faces. Good morning, Rupati. As we decided to talk about, rather to discuss communication and language, and I would love to take Indian perspective of it. I had thought several things to talk about, several technical things, but I now, since things have been made so pleasant, so I am tempted to leave the theories away and to talk about something pleasant and something that will be easy for us to grasp and to discuss. When we say language, so normally language and linguistics are read from Western point of view. Whenever we say linguistics, so generally the theories that come before us, all theories are imported from the Euro-American tradition. I'll give an example. Those who teach communication skills to these technical courses or AICT courses or MBA, BBA and all. See, when we say communication, so we take a communication model in which we say that, okay, there is a speaker and then he has an intention to speak, and then and then we say, okay, he chooses a medium to speak and a mode of speaking, and then it is received by the listener, and the listener decodes it. So coding, decoding, and
we take this example. And this is like the most popular model to teach communication. And when we teach communication, then again we talk about some hurdles of communication and ways to overcome those hurdles, cultural hurdles, philosophical, physiological, and so many other hurdles, and how we can remove those hurdles. So all these theories, and when we talk of linguistics theory, we talk of linguistic relativity, Sapir-Whorf hypothesis, as we technically call it. So I would not like to go into it. For a change, let us take Indian point of view. In India, when we talk of language, let me first make it clear that each one of us have at least one language. Because we cannot survive by not having a language. Language is synonymous with life. As human beings, we are social people. And as we are social, we have to have some kind of language. It may be an elaborately done and well-developed language, or it may be quite a rudimentary kind of language, or quite a complex type of process. But we have to have a language, and not only language, we have one language at least, and with that we have an identity, because language is very closely connected with the identity. When you are in some foreign lands, and there if you find a person speaking your language, immediately you identify the person with yourself, and you will try to approach the person. At least you will smile, you'll pass a smile to the person and expect that, okay, the other one will smile back. So language is very closely connected with the identity. So at least we have one identity and one language. This is an ideal thing. But the practical thing is we have multiple languages and we have multiple identities. Because whenever we live in a society, we may have languages in the sense of we know English, we know French, we know Portuguese and all that, but at least various varieties of language. Even within Punjabi, we have various varieties of Punjabi. Within Hindi, in Delhi itself, we speak several Hindis. Hindi spoken by the people trans Yamuna is different, and English and Hindi spoken by the people who are in old Delhi, old city. That Hindi is different, and imagine people speaking Hindi Nangloi or Mundaka, that area. That Hindi is altogether different, and Hindi spoken somewhere towards Gurgaon. So that is different. So we have variety of languages, and when we have multiple languages or many languages, similarly we have multiple identity too. Because we do not carry one identity. We have a pack of identity cards, in fact, always. There is no one identity, because we cannot afford to be stuck with one identity. We have identity cards. We are in our professional space, we have one identity, and we play that card. Okay, this is what I am. And then whenever we are in our family, our identity card changes. Then I am a different identity. And whenever we are somewhere, say we are in Goa, and then on the beach, the identity differs. So we have identity cards. So language and identity, we can have multiple of them. So it is, as I told you, it is integral part of our being. Right? Because why integral part? Because we live as society, and in a society we are bound to have a culture. Because we have our individual habit patterns, and when we practice those habit patterns within a group, and we find other people also, they are behaving in a similar way. That means as a group, it is called culture. The way of behaving, on individual level, it is habit, and on the level of group, it is a culture. That we all know. So it means what we get out of all that we have discussed so far is that we have an individual identity, and then we have a cultural identity, a collective identity also. So hence we have multiple identities. So in Indian tradition, when we talk of English, when we talk of language, the word that is used here is vak. In English, when we spell it is VAK.
वाक, सरस्वती माता को वाक देवी कहा जाता है, वाक की देवी। यहां पर वाक का मतलब भाषा ही नहीं है, हियर लैंग्वेज। और वाक, वाक हियर मीन्स शब्दों से, वर्ड से, बोलकर, वाणी से जो भी चीज होती है, हम तो वाणी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। वाक भी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, बिकॉज वी कम फ्रॉम ए सोसाइटी एंड एवरीबॉडी कम्स फ्रॉम ए सोसाइटी व्हिच इनिशियली did not have much of the equipment to write down and to write with. So we had oral kind of tradition. एक चीज मैं यहाँ पे बताऊंगा कि कल्चरली ऑल ओवर द वर्ल्ड हमने किस चीज पर ज्यादा यकीन किया है, लिखी हुई बात पर या कही हुई बात पर? गुरु जी की जो वाणी है, हम उनको गुरु वाणी कहते हैं, गुरु का लिखा हुआ नहीं है, वो वाक है, वो कही गई है। कुरान कही गई है, वेद कहे गए हैं, इसलिए उनको श्रुति कहा गया। वो सुने गए, जो सुने गए तो somebody must have spoken। तो हमने सबसे ज्यादा जो यकीन किया वो कही गई बात पर किया। ऑल आर रिलीजियस स्क्रिप्चर्स वो कहे जाते हैं, वाणी सुनी जाती है, शब्द सुने जाते हैं। वो कहती है शब्द हो रहे हैं, तो शब्द हो रहे हैं का मतलब शब्द लिखे नहीं जा रहे, कहे जा रहे हैं और हम सुन रहे हैं। सो कहा और सुना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इन इंडिया लैंग्वेज इज एक्चुअली वाक। और वाक की जब हम बात करते हैं तो मीन इट इज वेरी सेंट्रल टू आवर फिलॉसफी इंडियन, एंड नॉट ओनली आवर फिलॉसफी, इट इज सेंट्रल टू ऑल फिलॉसफीज। इवन क्रिश्चियनिटी भी ये कहती है कि सबसे पहले शब्द था, फर्स्ट देयर वाज वर्ड, पहले शब्द, जब कुछ भी नहीं था तो शब्द। और भारत में भी ये कहा जाता है, हमारी जो ज्ञान परंपरा है उसमें भी ये कहा जाता है, अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम विवर्तते अर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यथा। ये सबसे पहले जो है, जो कुछ भी नहीं था तब शब्द। अब ये देखिए, जो सबसे पहला जो हमारे पास नॉलेज का या लैंग्वेज का जो पहला जरिया जो आता है, दैट इज वेद। एंड वेद all वेद आर कंसीडर्ड एज अ मानते हैं हमारे सामने। आर अपौरुषेय, पुरुष, यानी कि यहाँ पर पुरुष मतलब स्त्री पुरुष नहीं, ह्यूमन बीइंग। सो अपौरुषेय इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे आर बियॉन्ड ह्यूमन एजेंसी। इतनी वास्ट नॉलेज जो रिवील हुई, जो दृष्टा थे, जो ऋषि थे, उनके दिमाग में उन्होंने उसको विजुअलाइज किया। इट केम टू देम, इट अपीयर्ड टू देम। इट इज अ बिट मिस्टेक। अब आप कहेंगे जी कैसे हो सकता है, हाउ इट इज अपीयर्ड? अपीयर्ड का मतलब ये है कि वो आइडियाज जो हैं वो अपीयर हुए उनके दिमाग। लेट अस टेक एन एग्जांपल कि आर्किमिडीज वो थिंकर थे, बहुत बड़े थिंकर थे, लॉ ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज, राइट। अब जब वो डेली बेसिस पे हमेशा सोच रहे होते थे, साइंटिस्ट क्या करते हैं या कोई भी थिंकर्स किस लिए सोचते हैं? दे थिंक टू अनअर्थ द लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति के नियम है उनको जानने के लिए। आर्किमिडीज वाज थिंकिंग। अब करते करते एक दिन वो तालाब में नहा रहा था, ये थोड़ी वो पहली बार नहाया था उस दिन, इससे पहले कभी नहाया ही नहीं था। तो नहा रहा था तो एकदम से पानी जैसे बाहर गया, वो जैसे तालाब में उसमें पूल में गया, एकदम से बहुत सारा पानी बाहर गया। And all of a sudden he realized that okay, that is the idea. कि जितना बॉडी मेरी अंदर गई उतना पानी बाहर गया। And then he further thought of, I mean, it was a flash of thought. It was just a flash of thought. इसको स्फोट कहा गया। स्फोट का मतलब ही विस्फोट जैसे होता है। तो let us call it flash of cognition, flash of awareness. तो एकदम से उसको अच्छा, okay, that is the funda, this is nothing. The knowledge appeared. मतलब मैं सिर्फ ये समझने और समझाने की तो खैर नहीं, हम सब समझते हैं, मैं खुद समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि शायद ऐसा सा कुछ वेद की नॉलेज रिवील हुई। दैट इज व्हाई
वो इनको ऋषियों को दृष्टा कहा गया। सो नॉलेज केम दैट वे, और दैट इज व्हाई दे से वो जो नॉलेज थी, जो पहली जो नॉलेज थी वो, और कोई ना कोई तो लैंग्वेज हुई होगी उस वक्त। हम कहते थे पहले भाषा ही नहीं थी, तो ऐसा नहीं है, कोई तो भाषा रही होगी। और फिर भाषाओं में जब उन्होंने उस चीज को ग्रास्प किया, एंड देन दे फर्दर प्रोपेगेटेड इट and to their students, and their students they became teachers, and then they further propagated it, और वो knowledge इस परंपरा, that's why it is परंपरा, इस परंपरा में वो knowledge फैल गई। और फिर कहते हैं कि महर्षि वेद व्यास ने उस सारी knowledge को कंपाइल किया, इसलिए कहते हैं वेद व्यास ने वेद लिखे। So वो उन्होंने लिखे नहीं, उन्होंने उस सारी उसको कंपाइल किया, and compiled it, and then he further classified the whole information in 4, तो इसलिए 4 वेद कहे जाते हैं, all that anyway। बट वाक की जब हम बात करते हैं, लेट्स कम टू लैंग्वेज अगेन। सो वाक का मतलब ये है कि मींस वाक मींस नॉट ओनली लैंग्वेज, इसका मतलब है वो वाणी, वो शब्द, उनकी समझ, द मीनिंग ऑफ लैंग्वेज, बिकॉज नो वर्ड कैन बी थॉट ऑफ सेपरेट फ्रॉम इट्स मीनिंग, ये कभी हो ही नहीं सकता। और हमने शब्द को प्रमाण माना, एविडेंस माना है, उसको प्रूफ माना है। हमारे बहुत सारे न्याय शास्त्र में, भारतीय परंपरा में प्रमाण होता है। लॉजिक, अब वेस्टर्न लॉजिक पढ़े तो उसमें भी प्रूफ जो है, एविडेंस जो है, एविडेंस की एक अपनी थ्योरी है। प्रमाण होते हैं, परसेप्शन का एक प्रमाण है कि जो हमें दिखता है, सुनता है, वो हम उसको मानते हैं, वैलिडिटी है, वो वैलिड नॉलेज है। और फिर वर्ड जो है वो भी एक प्रमाण है। तो हमारी परंपरा में अगर आप देखें तो हमारे जो स्कूल ऑफ फिलॉसफी है, जिसको हम दर्शन कहते हैं, तो भारतीय परंपरा में जो दर्शन है उनमें जो है शब्द को प्रमाण माना गया, सारे दर्शनों में नहीं। और जब हम दर्शन की बात करते हैं तो इसमें भी ये बता दें कि रिजिड सिस्टम ऐसा कुछ नहीं है। हम कहते हैं जी वेद है, पॉलिशे है, जो वेद में लिख दिया वो फाइनल है, ऐसा कुछ नहीं है। 9 दर्शन है। देयर आर 6 philosophy, 6 schools of philosophy, 6 दर्शन, षड दर्शन वो हैं जो वेदों को प्रमाण मानते हैं, और 3 दर्शन वो हैं जो वेदों को प्रमाण नहीं मानते। That is why they say there are 6 आस्तिक दर्शन and there are 3 नास्तिक दर्शन। So आस्तिक और नास्तिक का मतलब वो थीइज्म और एथीइज्म में मत समझिए प्लीज। वेस्टर्न पैराडाइम में theist means who believe in God, atheist means who does not believe in God, but here theism, theist and atheist is not equal to astic, nastic, please. Astic means those schools of thoughts which take Ved as valid proof of knowledge, final proof of knowledge. Nastic darshan wo hain, they do not take, they understand, they say Ved is a knowledge, it's a source of knowledge, but they do not take it as a final proof of knowledge. They are logicians and they say that, okay, unless we argue it and they have their own ways to understand things, चीजों को समझने के लिए उनके वो अपने तरीके हैं। बहुत important है यहाँ पर, I would like to mention चारवाक दर्शन। All of us must have heard this name। चारवाक का मतलब होता है चारू वाक, जो वो कहा गया जो हमें सुन के अच्छा लगा। जो चारू का मतलब है हमें अच्छा लगा, राइट। तो ये चारू वाक, तो इस शायद उसकी उसका नाम चारवाक पड़ा। तो चारवाक कोई पर्टिकुलर आदमी नहीं था। तो चारवाक दर्शन में तो बहुत ही एक्सट्रीम है। जैसे यावत जीवे सुखम जीवे, ऋणम कृत्वा घृत पीवे, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनर्जन्म कुतः, राइट। इट मीन्स जब तक जियो खुशी से जियो, सुख से जियो, चाहे उधार लेके भी जी पियो, ऋणम कृत्वा घृत पीवे, भस्मीभूतस्य देहस्य, ये देह जो है वो भस्मीभूत है, ये खत्म हो जानी है, राइट। पुनर्जन्मम कुतः, तो जो पुनर्जन्म का क्या पता हो ना हो, किसने देखा है। सो उसको भी एक हमने दर्शन कहा है, भाई ये भी एक दर्शन है, ये भी एक फिलॉसफी है। भाई फिलॉसफी मींस ये भी एक नॉलेज है, एक सोचने का तरीका है। सो दिस इज आल्सो दर्शन। सो एनीवे, सो इट मींस यहाँ पर जो 9 दर्शन है तो हमारे 6 आस्तिक एंड वन मोर थिंग, थीइज्म और एथीइज्म से याद आया
when we say theist means those who believe in God. जो आस्तिक दर्शन है, सरप्राइजिंगली all आस्तिक दर्शंस do not believe in God. मीमांसा वो ईश्वर में बिलीव नहीं करते, वो दार्शनिक ये कहते ईश्वर है ही नहीं उनके लिए, वेदांती ईश्वर है ही नहीं, वेद जो है वो फाइनल वेद है जो है, राइट। मीमांसा क्या वो कर्म कांड है, ईश्वर नहीं है। वो क्या कहते हैं वेदांती जो है, या फिर आप ये देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती का जो, वो कहते हैं कि भगवान की मूर्ति और ये सब कुछ नहीं होता, जो वेद में लिखा, वेद में कोई भगवान की मूर्ति नहीं, सो वो ईश्वर को नहीं मानते, इसका मतलब उसे टेक्निकली वो नास्तिक होने चाहिए। सो दैट इज व्हाई देयर इज अ डिफरेंस ऑफ परसेप्शन। कोई एवरी लैंग्वेज कम्स विद अ लोड ऑफ कल्चर विद इट। हर भाषा अपने साथ कुछ अपना एक कल्चर लेके आती है और उसकी कल्चर के रेफरेंसेस होते हैं, राइट, एंड वी कैरी दोज कल्चरल रेफरेंसेस इवन the culture, you know, it is reflected on the face, it is reflected on how you behave. साक्षी मलिक ने अभी अब की बार जब वो चैंपियनशिप जीती थी, राइट, महाबली है भाई, वो उठा के फेंक देती दो बंदों जी साक्षी मलिक, और जब वो जीती तो वो इंडियन कल्चर की रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूँ। इफ यू रिमेंबर दोस विजुअल्स जो अखबार में छपे थे, जब वो खड़ी थी पोडियम पर अपना वो इनाम लेके, कितनी सिमटी हुई, सकुचाई हुई सी, क्या आप यकीन करती कि वही लड़की है जो उठा के फेंकती है, राइट। सो दीज आर द कल्चरल रेफरेंसेस जो जो कहते हैं जी खून में है। खून का मतलब है वो संस्कारित है, वो हमारे थॉट प्रोसेस में चले जाते हैं। सो एनीवे, सो इट इज साउंड, लैंग्वेज इज साउंड, वाक जो हमने सुना, जिसको हम सुनते हैं और जिसको समझते हैं। पहला जो साउंड है, जैसे दैट प्रणव, ओम की जो आवाज है वो महास्फोट या बिग बैंग के साथ वो आई और उससे इवोल्यूशन की प्रोसेस हुई, शुरू हुई। व्हेन वी टॉक ऑफ वर्ड, वाक को हम सिनोनिमसली वर्ड कहेंगे या शब्द कहेंगे या लैंग्वेज कहेंगे, इट्स ऑल द सेम। बात यहाँ पर जब मीनिंग क्या, लैंग्वेज और वर्ड मीन्स इट हैज टू हैव अ मीनिंग। इंडियन सिस्टम में ऐसा माना जाता है, आचार्य भर्तृहरि उनकी बुक है वाक्यपदियम, दैट इज वर्ड्स इन अ सेंटेंस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट book as far as linguistics is concerned. Let me tell you, Acharya Bhartrihari was the first structuralist and was the first post-structuralist of the world. When we talk about, हाँ, जब भी हम स्ट्रक्चरलिज्म की बात करेंगे, those who are from languages, एक बहुत लाडला सा नाम है हमारा फर्डिनेंड सोशर, और जैसे कि फर्डिनेंड सोशर से पहले कुछ था ही नहीं, so we talk of Ferdinand Saussure, who was a structuralist, and then Roland Barthes and Jacques Derrida, Jacques Lacan, and there are so many names, the list is very long. Lekin Bhartrihari was the person who really wrote a very elaborate book talking about, or rather theorizing, how language works and how meaning appears. And the श्लोक is very dear to me. वाक्यपदियम जब आप पढ़ेंगे, आप गूगल भी करेंगे, वाक्यपदियम 1 of 1, यानी कि चैप्टर 1 जो उसका ब्रह्म कांड है, उसका पहला जो श्लोक है, वो सारी स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म को समझाता है। यहाँ पर स्ट्रक्चर का मतलब है, हम सभी समझते हैं स्ट्रक्चर एक ढांचा, तो भाषा का भी ढांचा होता है, भाषा का भी भाषा का नहीं, समझ का ढांचा होता है, सोचने समझने का, नॉलेज का एक ढांचा होता है, समाज का, हर चीज का एक स्ट्रक्चर होता है। तो स्ट्रक्चरलिज्म ये कहता है कि अगर हम किसी स्ट्रक्चर को समझ जाएं तो उसके मीनिंग को, उसके आउटकम को समझ जाएंगे। अगर हम ये समझ जाएं कि 4 दीवारें खड़ी होने वाली हैं, उस पर ऐसे ऐसे छत आएगी, उसमें ऐसे ऐसे लगेगा, तो हम ये आउटकम समझ जाते हैं। इसका आउटकम का मतलब ये है कि कोई मकान बनने वाला है, कोई बिल्डिंग बनने वाला है, वो पक्की बनेगी, कच्ची बनेगी। अगर हम स्ट्रक्चर को समझ जाएं तो फिर उसके आउटकम को, उसकी यूटिलिटी को भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा होगा। दिस इज स्ट्रक्चर। तो भर्तृहरि का पहला श्लोक जो वाक्यपदियम ब्रह्म कांड है, फर्स्ट कैंटो, वो कहता है कि अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षर। He takes a philosophical point of view to understand language. And friends, when I say point of view, because point of view is very important,
Because whenever we are discussing something or we are thinking about something, we can never be neutral, and we can never talk from isolation. No one of us can talk from isolation. We have to have some point of view. अब मैं ये जो कैमरा जो मेरे सामने लगा हुआ, आप जो मुझे देख पा रहे हैं, इस कैमरे ने एक पॉइंट ऑफ व्यू लिया है, एंड कैमरा मुझे इस पर्टिकुलर तरह से देख रहा है जो आपको दिखा रहा है। इफ आई चेंज द पॉइंट ऑफ व्यू लाइक दिस, तो पॉइंट बदल गया तो व्यू भी बदल गया। अगर हम इसको ऐसे कर देंगे तो पॉइंट बदल गया तो व्यू भी बदल गया। एंड we cannot afford not to have a point of view, because we have to have a point of view. हम कहीं तो खड़े होंगे, किसी तरफ तो मुंह करेंगे ही करेंगे। So that is why we have to have some point of view when we explain something. So भर्तृहरि, आचार्य भर्तृहरि, क्योंकि वो अद्वैतवादी थे, नॉन ड्यूअलिस्ट थे। अद्वैतवाद का मतलब है कि हम और परमात्मा, ब्रह्म जो भी कहेंगे, अल्टीमेट रियलिटी जिसको आप कहिए, अल्टीमेट रियलिटी, और हमारे बीच में कोई भेद नहीं है। हम भी वही है और वो भी, हम ब्रह्मास्मि। तो वो अद्वैतवादी थे, तो उन्होंने वही पॉइंट ऑफ व्यू दिया। एंड देन ही एक्सप्लेन्स लैंग्वेज एज अनादि निधनम। अनादि निधनम मीन्स जिसका कोई आदि नहीं, जिसका कोई अंत नहीं। ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षर, वो ब्रह्म यानी कि वो जो ईश्वर या वो जो रियलिटी है, वो अल्टीमेटली शब्द तत्व है। यानी कि उन्होंने शब्द को ही ब्रह्म माना। आज हम ये आप ये देखिए कि फाइनली जो गुरु परंपरा में लास्ट गुरु हैं, वो गुरु ग्रंथ साहब जी, वो शब्द हैं। अब वो शब्द तत्व हमारे लिए अल्टीमेट है। इससे पहले भर्तृहरि ने भी ये कहा कि अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम। ये शब्द ब्रह्म जो है वो शब्द तत्व के रूप में, और वो जो अनादि है, जो अनंत है। यत अक्षरम, अक्षर का मतलब क ख ग नहीं है, जिसका क्षरण नहीं होता, विच इज नॉट सब्जेक्ट टू डिके। तो वो ब्रह्म, वो अल्टीमेट रियलिटी in the form of word, in the form of shabd, in the form of language, that is not subject to decay. ये उसका उन्होंने स्वरूप बताया। अब वो अर्थ कैसे उसका आता है? अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम विवर्तते अर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यथा। उन्होंने कहा विवर्तते अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम, विवर्तते अर्थ भावेन। विवर्त का मतलब होता है इट इज लूजली इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन। दैट शब्द, दैट अल्टीमेट रियलिटी ट्रांसफॉर्म्स इटसेल्फ और रिफ्लेक्ट्स इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मीनिंग। एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ दैट मीनिंग? ये जगत की प्रक्रिया, यानी कि वो जो रियलिटी है उसने अपने आप को जगत के रूप में रिफ्लेक्ट किया हुआ है। हम कहते हैं ये सब कुछ परमात्मा का स्वरूप है। मीन्स द रियलिटी इज द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड इज इट्स मीनिंग। यहां पर बात आ गई, इट इज इक्वल टू फर्दिनैंड सोशल। आई एम बीइंग टेक्निकल हियर। जो कलीग्स हमारे लैंग्वेज से हैं वो शायद ज्यादा अच्छे समझ पाएंगे। फर्दिनैंड सोशल ने ये कहा था, एनीवे फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीबॉडी, फर्दिनैंड सोशल ने ये कहा था कि एक मॉडिफायर, एक सिग्निफायर होता है और एक सिग्निफाइड होता है, एंड एवरी सिग्निफायर हैज अ सिग्निफाइड। और सिग्निफायर यानी कि ये पेन है तो पेन सिग्निफायर हो गया, लेकिन इसकी जो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में उभरती है इस पेन को देख के, या PEN लिख दिया और उसको देख के जो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में उभरी वो उसका सिग्निफाइड हुआ। तो देयर इज अ कांस्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिग्निफिकेशन। दिस इज व्हाट फर्दिनैंड सोशल। अब यहां तक भर्तृहरि फर्दिनैंड सोशल के लेवल पे,
कि विवर्तते अर्थभावे प्रक्रिया जगतो यथा। लेकिन हम विवर्त को अगर अच्छे से समझें तो विवर्त का एक्चुअली मीनिंग इज नॉट जस्ट रिफ्लेक्शन, इट मीन्स इट्स अ फॉल्स रिफ्लेक्शन। विवर्त मीन्स रिफ्लेक्शन है, परछाई है, लेकिन फॉल्स परछाई है। इट इज लाइक प्रोजेक्शन। आप सिनेमा हॉल में जाते हैं, पीछे से कोई आदमी प्रोजेक्ट करता है और जो पर्दे पे जो दिख रहा है वो जब चाहे उस प्रोजेक्शन को विड्रॉ कर लेता है, पर्दे पे कुछ नहीं, एकदम से गायब है, खत्म। तो जो दिख रहा था इट वाज फॉल्स रिफ्लेक्शन। तो भर्तृहरि लैंग्वेज का जो नेचर बताते हैं वो ये कहते हैं। अब यहां पर आई कम टू जैक्स दरिडा, जो पोस्ट स्ट्रक्चरिस्ट थे, जिन्होंने कहा कि एक शब्द है और आप जो अर्थ कह रहे हो उसका अर्थ फिक्स नहीं हो सकता, उसका मीनिंग एक जैसा नहीं रह सकता, किसी भी शब्द का अल्टीमेट मीनिंग नहीं होता, और रादर एक शब्द का मीनिंग पॉसिबल ही नहीं है। इट कीप्स शिफ्टिंग एंड शिफ्टिंग एंड शिफ्टिंग एंडलेसली एड नॉसिम, और उसका मीनिंग कोई, उसका एवरीथिंग इज, आई मीन उसकी जो थ्योरी है जैक्स दरिडा की, डिकंस्ट्रक्शन की थ्योरी, डिकंस्ट्रक्शन का मतलब खोल के उसको डाल देना, मतलब खत्म करना नहीं उसको, राइट। तो जो वो कहते हैं, उससे पहले भर्तृहरि कह चुके कि उसका जो विवर्त है, जो फॉल्स रिफ्लेक्शन है, और बाद में जो सब्सिक्वेंट श्लोक्स हैं जिनमें बताता है काल शक्ति मुपाश्रयात्, कि वो समय की शक्ति के कारण, काल की शक्ति के कारण वो अलग अलग दिखता है, अलग अलग तरह से रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन वो असल में वो है नहीं जो तुम्हें दिखता है। इसी तरह से इसको अब अगर हम भर्तृहरि से थोड़ा सा बाहर ले आए और आज की लैंग्वेज में बात करें, व्हाट ही सेज, ये शब्द जो है, कोई भी लैंग्वेज में अगर कुछ कहा गया है उसका मीनिंग, whenever you hear something you will have some meaning in your mind, कुछ आपके दिमाग में जरूर आएगा, उसका मतलब कुछ तो जरूर होगा। अब आपने कोई श्लोक सुन लिया, आपने किसी भी भाषा में कुछ सुन लिया, तो उस साउंड से मिलते जुलते मीनिंग्स आपके दिमाग में बिल्कुल आएंगे, जरूर आएंगे। सो दैट इज द मीनिंग फॉर यू फॉर दैट मोमेंट, उस वक्त के लिए आपका मीनिंग वो है। बट subsequently when you get more and more exposure to that language, so you will get different levels of meaning, rather more clarity, clearer meaning, higher level of meaning. So this is how meanings keep improving itself. Here it is important to know that there is one more shlok in same Vakyapadyam 32 या ऐसा कुछ श्लोक है, जिसमें कहते हैं अवस्था देश काला नाम भेदार विन्यास शक्ति भावा नाम अनुमाने ने सिद्धि दुर्लभा। इसका मतलब ये है कि कोई भी मीनिंग 3 क्वाड्रेंट से होता है। वन इज अवस्था, देश, आई मीन टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस। सर्कमस्टेंसेस ये सारी चीज मिलकर बनती है कॉन्टेक्स्ट। A meaning exists in a context. The context changes and the meaning changes. How the meaning comes? Indian theory says कि जब भी हम कुछ सुनते हैं, मैं कुछ बोल रहा हूं और आप कुछ सुन रहे हैं, तो the moment you hear something, there is a flash of cognition in your mind. Immediately your mind says that okay, this is being said. जब आप वो फ्लैश है कॉग्निशन, राइट। इट इज अदर वे आल्सो हाउ यू स्पीक। यहां पर गहराई जो किया गया, तो व्हाट इट सेज, वाक हैज गॉट 2 लेवल्स, वन इज परावाक एंड वन इज अपरावाक। परावाक इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निशन व्हिच वी विल नॉट टॉक अबाउट हियर, बिकॉज़ वो आध्यात्मिक वो चला जाता है। जब आप ध्यान की अवस्था में होते हैं, तो जब उस रियलिटी के साथ आप एक हो जाते हैं, that stage हम अपरावाक की बात, अपरा मीन सांसारिक, यानी कि वर्ल्डली। सो दिस अपरा प्रकृति कहते हैं कि प्रकृति के 2 रूप होते हैं, परा और अपरा। अपरावाक मीन्स there are 3 levels on अपरा। one is पश्यन्ति, one is मध्यमा and one is वैखरी। पश्यन्ति is that level of walk where something is there in the form of feelings,
हम एक एग्जांपल लेते हैं कि चलिए डॉक्टर सीमा को प्यास लगी। The moment she feels thirsty, thirsty तो हमने इसलिए कह दिया we have equivalent word here, या प्यास कह दिया हमने। तो प्यास किसी लैंग्वेज में लगी थी, प्यास किसी भाषा में थोड़ी लगती है। आपको एहसास हुआ कि आपको प्यास लगी, इट इज नो लैंग्वेज, किसी भाषा में नहीं होती। आप खड़े खड़े मान लो थक गए, तो क्या अंग्रेजी में थके या पंजाबी में थके या नो, थकान इज अ फीलिंग। You just felt it. You just visualized that you are tired. You just visualized that you are hungry, you are thirsty. So Pashanti is that level where you get that flash of cognition. Okay, this, and it has no language. So this level of vak or this level of that, I don't know, because there is a difference of knowledge system. So I have no other word. Let us borrow language. The word language. So this is the first level of language, first level of vak, where it is just a feeling. आपको फील हुआ, आप एकदम से कुछ देखा, आप सैड हो गए। तो आप किसी भाषा में सैड नहीं होते हैं, आपको जस्ट यू फेल्ट हैप्पी, राइट, या कुछ भी आपके दिमाग में आया, तो दैट इज नॉट अ लैंग्वेज, वो पशंती लेवल है। देन मध्यमा, मध्यमा इज व्हेन दैट लेवल of feeling transforms to the level of thought. And you see, whenever you think in a language. Whatever language we are most comfortable in, we think in that language. Right? So, when that feeling comes to the level of thought, so हम उन एहसास को शब्द दे देते हैं। इस फीलिंग और उस पे मुझे एक सॉन्ग याद आ रहा है, प्लेजेंट मॉर्निंग, वो बहुत पुराना, जो हमारी इसी उम्र के हैं उनको ज्यादा शायद सॉन्ग याद होगा। दैट इज साधना की शायद थी, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने देखी है इन आंखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इन्हें रिश्तों का इल्जाम न दो। एंड देन दिस सिर्फ एहसास है, ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। I mean, when the feelings are given names, when the feelings are assigned words, the politics starts. Why I say? Because all language is political. Whenever we feel something and then we choose to say it, we have to assign words to it. And assigning words is always political. Why always political? What is political? Political means doing that which will bring you the utmost benefit. Is political. मतलब फलाना पॉलिटिकल खेल रहा है, पॉलिटिकल खेल रहा है का मतलब यही है कि वो सारे काम कर रहा है जिससे उसको फायदा होगा। टेक्निकली पॉलिटिक्स इज दिस। तो वो शब्द जो आपको लगता है ये ठीक रहेगा, इसको ऐसे बोलो, तो it means on the Madhyama level, that flash of cognition which initially arrived or which initially dawned upon you in the form of feeling, you assign words to it, but the words are not still spoken. This is Madhyama, where the feelings are given language, and then the third stage is Vakri, where you speak, you give it a physical form, because शब्दों की भी तो एक फॉर्म होती है ना। सारे शब्द एक पर्टिकुलर शेप में, एक पर्टिकुलर फॉर्म में कहे जाते हैं, राइट। हर लैंग्वेज का एक अपना म्यूजिक होता है, एक अपना रिदम होता है, राइट। अब हम अगर ये कहें, कोई ये कहे कि मैं भारत तो हूं, तो बेशक अपने आप को पंजाबी कह ले, लेकिन मैं उसको पंजाबी नहीं मानूंगा अनलेस द पर्सन सेज कि मैं भारत तो, है ना। तो भारत, पंजाबी में भारत नहीं होता, ऐसा मेरा मानना है।
unless you say part, right? तो वो लगेगा नहीं कि पंजाबी बोली, because every language has got its own music, उसका एक अपना शेप होती है उसकी, राइट? तो वो शेप आप उसको देते हैं, आप वो फिजिकल फॉर्म में जो आप सुन रहे हैं वो आप वैखरी सुन रहे हैं. सो देयर आर 3 लेवल्स, जिसमें एक पश्चंती का लेवल होता है जहां से शुरू होती है. और अब यहाँ पर मीनिंग कहाँ से है? मीनिंग इज असाइन्ड टू इट according to your exposure to the world, exposure to that language. The more and more you are exposed, and that will decide the meaning that you assign to it. But again, the meaning is not final. वो meaning final नहीं होता. As Bhartrihari says, it is just vivarth. But one thing is for sure, that every language, every word has to have a meaning. किसी भी शब्द का एक मीनिंग तो उसका होना ही होना, क्योंकि अगर मीनिंग नहीं होगा तो वो शब्द है ही नहीं. व्हाट इज अ वर्ड? इट्स अ मीनिंगफुल एंटिटी. वाक क्या है? वाक वो है जो अपने शब्द के साथ आती है. आचार्य कालिदास ने रघुवंशम जब लिखा, महाकाव्य उनका, तो सबने नाम सुना होगा. अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा था उन्होंने रघुवंशम. रघुवंशम में उनका एक श्लोक है जिसमें वो कहते हैं कि वागर्थ विव संप्रक्तो वागर्थ प्रतिपत्ते जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर. ये पहला, जब भी कोई भी जो महाकाव्य शुरू करते थे तो उससे पहले इन्वोकेशन लिखी जाती थी. वो पहले कहते थे कि परमात्मा मुझे इतनी शक्ति दीजिए, मुझे वो ज्ञान दीजिए कि मैं इसको लिख सकूं. तो कालिदास जो है वो पहला श्लोक रघुवंशम का जो लिखते हैं वो उसमें लैंग्वेज की थ्योरी की बात करते हैं. वो यानी कि परमात्मा को लैंग्वेज के माध्यम से समझते हैं. इसे वाग अर्थ विव संप्रक्तो, वाक और अर्थ को मिलाओ तो वागर्थ हो जाता है, क का ग बन जाता है ना. तो वाग अर्थ विव संप्रक्तो, जो वाक और उसके अर्थ, शब्द और उसके अर्थ की तरह इनसेपरेबल हैं, which can never be separated. Because वो यहां पर उनका कहने का मतलब ये है कि शब्द को उसके अर्थ से सेपरेट नहीं किया. वो क्या अर्थ होगा, that is a different thing, but it will have some अर्थ, एक मीनिंग तो होगा उसका. तो यानी कि हर शब्द का एक मीनिंग तो होगा ही होगा. और वो मीनिंग क्या होगा, that depends upon the exposure of the hearer. तो सुनने वाला जो है वो टेक्निकली कितना एक्सपोज्ड है, वर्ल्डली कितना एक्सपोज्ड है, उस लैंग्वेज में कितना एक्सपोज्ड है, नंबर 1. नंबर 2, उसकी जो फीलिंग्स हैं उस वक्त की, जो उसकी भावात्मक जो स्तर है, वो यानी कि खुश है, वो दुखी है, वो क्या है, वो उसी कॉन्टेक्स्ट में उसका मीनिंग समझे. सो वाग अर्थ विव संप्रक्तो, वाणी और उसके अर्थ की तरह जो इनसेपरेबल हैं. वाग अर्थ विव संप्रक्तो वाग अर्थ प्रतिपत्ते, उस शब्द और अर्थ के ज्ञान के हेतु जगत पितरो वंदे, जो पूरे जगत के पित्र हैं, पूरे जगत के माता पिता हैं. कौन है? आदिदेव, पार्वती, परमेश्वर. उन पार्वती और परमेश्वर को, यानी कि उन शिवा को मैं जो है प्रणाम करता हूं और उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे शब्द और उसके अर्थ की समझ दें ताकि मैं इस रघुवंशम को पूरा कर सकूं. सो कोई भी जब शब्द होता है तो उसका एक अर्थ होता है. इट हैज टू बी देयर. नाउ हाउ टू अंडरस्टैंड? देयर आर 3 लेवल्स ऑफ अ मीनिंग. As we all know, in English we are taught that there are 2 levels. One is the dictionary meaning, that is direct meaning, and one is a metaphorical. What is often called denotative and connotative. Connotative, yes. But here there are 3 levels in Indian tradition. First is abhida, direct meaning, denotative meaning, and second level is lakshana. You say connotative meaning, right? Lakshana का मतलब है which reflects upon the lakshans, symptomatic.
तो सिम्टम्स को देख के, उसके लक्षण देख के आप एक मीनिंग लगाते हो कि दिस इज द मीनिंग, लक्षण। आप किसी को कहें कि वो भी यार गधा है, राइट, तो ह्यूमन कैन नॉट बी गधा, सो अभिधा तो नहीं है। ए पर्सन मे हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए डोंकी, अड़ियल है वो, या दिमाग नहीं लगाता, दिमाग से काम नहीं करता। तो नॉर्मली हम बच्चों को कहते हैं ना, जो टीचर, मैं तो बहुत बार कह देता हूँ, तो हम सभी कह देते हैं गधे हो गया। सो इसका मतलब ये लक्षणा का लेवल है कि वी assign some characteristics of a donkey to a person, and then third and important meaning, that is व्यंजना, or we call ध्वनि। यहाँ पर ध्वनि का मतलब साउंड नहीं, यहाँ पर ध्वनि का मतलब है, आप कहते हो ना कि टुडे यू साउंड वेरी हैप्पी, है ना, तो यहाँ पर और यहाँ कहते हैं इट साउंड्स ब्यूटीफुल, इट साउंड्स गुड। तो साउंड का यहाँ पर वो मतलब है, ध्वनि का यहाँ पर वो मतलब है। The intonation, perhaps intonation, the way you sound. Yeah, could be a little about that. This is the deepest level of समझाने के लिए आप ये समझिए कि किसी ने कहा कि मैं तो गंगा पे रहता हूँ, तो अभिधा तो हो नहीं सकती, बिकॉज वन कैन नॉट हैव ए हाउस ऑन द फ्लोइंग रिवर। गंगा पे तो घर हो नहीं सकता। लक्षणा के लेवल पे ये हो सकता है कि भाई रिवर, मतलब मैं गंगा पे रहता हूँ, मतलब वो किश्ती में, लेकिन किश्ती में कोई परमानेंट थोड़ी रहता है। गंगा में हाउस बोट होती नहीं, वो लेक में होती, लक्षणा भी नहीं होता। जो ध्वन्यार्थ है, जो ध्वनि का मीनिंग, द डीपेस्ट लेवल ऑफ, वो मीनिंग वो है, वो ये असल में ये कहना चाह रहा है। अब आप अच्छा, इसका मतलब द फ्लैश ऑफ थॉट, जो स्पोर्ट, उसका मतलब ये है, अच्छा वो ये कह रहा है कि मैं जहां भी रह रहा हूं ना, वहां, अब हम सब भारतीयों के दिमाग में गंगा का मतलब क्या? प्योरिटी, सेरेनिटी, पीस ऑफ माइंड, है ना। जब अच्छा सा काम हो जाए तो हम कहते हैं गंगा जी सी नहा लिए, है ना, तो गंगा जी नहा गए, तो गंगा जी नहा गए का मतलब है आई एम पीसफुल नाउ, आई एम हैप्पी नाउ। सो मैं गंगा जी पे रहता हूं का मतलब ये है कि शायद इसका जो लास्ट, जो डीपेस्ट मीनिंग है, वो ये बन सकता है कि वो जहां रहता है, द प्लेस हैज गॉट दैट सेरेनिटी, दैट पीस ऑफ माइंड, दैट काइंड ऑफ एम्बियंस, that it is it gives a feeling that you are on Ganga, because ultimately जब भी कुछ अच्छा होता है, कहते हैं गंगा जी नहाए। नॉर्मली होता है जी, लड़की की शादी होगी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, हालांकि मैं इसको जेंडराइज नहीं करना चाहता, कोई चलो मैं कहते कोई बच्चा ब्याह दिया तो उसके बाद कहते चलो यार गंगा जी नहाए, ये काम, ऐसा बुजुर्ग कहते हैं, ऐसा बस कोई जिम्मेवारी पूरी हो गई तो कहते हैं गंगा जी नहाए। सो दैट इज द डीपेस्ट मीनिंग, वो जो ध्वन्यार्थ है। And they say when a writing or when something is said, it gives you that kind of meaning. It becomes literature. It becomes poetry. It means language क्या है? Language is an attire to our naked soul. हमारी जो आत्मा है, उसके कपड़े जो हैं वो लैंग्वेज है, और वो कपड़े जो बहुत ही इलेबोरेट हो जाते हैं, बड़े ब्यूटीफुल हो जाते हैं, तो वो लिटरेचर हो जाता है, वो साहित्य हो जाता है, इट बिकम्स लैंग्वेज। जस्ट आई थिंक इट्स अबाउट टाइम दैट एक्चुअली आई हैव एन इंटरव्यू पैनल, दैट्स व्हाई। Yes, sir. एक मिनट, मेरा फोन भी आ गया, एक सेकंड। Thank you so much, sir, for that very, very, very insightful and very lucid talk by you. I'm sure सभी लोगों ने बहुत enjoy किया होगा, because this is something that we all relate to. आपने Indian context में जो सारा समझाया, तो I think we all understand, being Indians, you know, many of us are multilingual and
we dabble with all our on a daily basis हम अपने religious texts को भी पढ़ते हैं, बहुत सारी जानकारी काफी लोगों के पास पहले से होगी, बट एंड वो आपको सुन करके इन सभी बातों को रिलेट कर पाए होंगे बहुत अच्छी तरह से. So thank you so much for that very very insightful talk. In fact, I was kind of reminded of all the Western terminology which I could think of, when you were talking of all this, because हमारे को Indian context का इतनी ज्यादा समझ नहीं थी. So I was trying to relate it with lang, parole, utterances in the Bhaktinian terminology. In fact, उनका तो और भी आगे चला जाता है with the double voice discourse, with the barbed words, and so many other interesting things that he has come up with. Indian theory goes much beyond Bhakti and Yes, all. yes, definitely. Right? I fully second you on that. The problem is our academia does not consider it. It's just that we look at them with and place them on a pedestal, and we kind of look our own inherent Indian tradition with disdain. That's the whole difference here. मैं अभी जो है last year की बात है, मैं Indian statistics पढ़ाता हूँ मास्टर लेवल पे. हाँ जी. जो फर्स्ट जब बैच आया उस साल का, तो I just asked बैकग्राउंड पूछते हैं ना, कौन क्या क्या करके आया ग्रेजुएशन में. तो एक बच्चे ने कहा कि मैं फिलोसफी ऑनर्स करके आई हूँ. अच्छा जी. बड़ी अच्छी बात है बेटा, चलो एक काम करो, तुमने कौन कौन से फिलोसफर पढ़े? So she started from Plato, Socrates and all that. मैंने कहा 2-3 नाम बताओ, इंडियन भी तो पढ़े होंगे, 3 साल तुमने ऑनर्स किया है, दर्शन शास्त्र पढ़ के आए हो. Surprisingly, she could not take even one name. Okay. उसके सिलेबस के मैंने ये पढ़ा. So I think at the policy making level also something is wrong with we not including our own Indian philosophers and Indian writers. I think that's something that needs to be looked into. कोई Indian thinker नहीं है, सब वो विडंबना है हमारे देश की. I can only say that, and thank you so much. If we have any questions from the audience, I think sir would be happy to answer them. We can have next couple of minutes. Yeah, if sir can spare a couple of minutes, we can understand you're very busy today and you have something scheduled for yourself already. If there's any question, we can put those questions. We have a question, I think, from Manpreet ma'am. Good morning, Seema ma'am. Good morning, sir. Good morning, Naresh sir. I don't have a question as such, sir, but I was reminded of my coursework class with you, and it was a beautiful to relive that experience, once again. So we have, Seema ma'am, we have been taught research ethics and English grammar by sir in our PhD coursework. Oh. And I was reminded of this class today, so it was very good interacting with him during that time and to relive that today, sir. After a long time. Yes, sir. Thank you so much for sharing your thoughts, Manpreet ma'am. Thank you, ma'am. Do we, Rupa ma'am? Yeah, I have nothing much to say, but show my gratitude, for the wide, varied, intensive, detailed concept of language that Dr. Saab has explained, which a layman would just take it only as bhasha. But with a deeper peep into it, we realize, that language is work, which is culturally influenced and keeps on shifting endlessly at different levels. So it was amazing to hear all that. Really, we are grateful for your presence and your wonderful presentation. I'm sure when we invite you next, you shall be surely obliging us with more bundle of knowledge. Love to be together again. In fact, I want to relate something interesting. In my initial interaction with sir, I told sir that we are from an engineering college. So if you can kindly make some kind of slide. So he said, no, hum bhasha wale hain, language wale hain. We can do a much better job of it by speaking rather than, relying on any secondary material or slides of that kind. So I think that was absolutely true to that. He spoke so well and so lucidly, and it was wonderful to partake of whatever he shared with us today. Thank you so much, sir. Thank you, Doctor. Thank you, Rupa ma'am. Thank you so much. And kindly do come sometimes to the campus. I sit in C block, and we would love to have a cup of tea together. Oh, sure. Definitely, sir. Definitely. Thank you so much. Thanks a lot for your presence, sir. Thanks a lot for this wonderful Thank you so much. And definitely, I have to rush. Otherwise,
Yes, I don't know if Pankaj sir wants to ask a question since he's raised a hand. Was raising hand. Yeah, there was someone who raised a hand. Pankaj sir, please. Please, sir. नमस्कार सर। नमस्कार जी सर। हाँ सर, पहले तो आपको क्या कहते हैं ना, साधुवाद देना चाहूंगा आपके शानदार लेक्चर के लिए। और मैं क्या कहता हूँ, जब आपका प्रोफाइल देखा था तभी, यूजली मैं इंटरप्ट करता नहीं हूँ, लेक्चर बहुत होते हैं, और आपके प्रोफाइल में मैंने जब लिटरेचर देखा था तो मुझे लगा कि हाँ भी लिटरेचर के साथ सुनने में कुछ ना कुछ नई चीज मिलेगी। तो मुझे वास्तव में जब आपने वेदांती और चारवाक दोनों को आपने इन्वॉल्व कर दिया तो ये भी समझ में आया कि आपका जो लेक्चर का जो इंटेंशन है वो किस स्तर तक आदमी जा सकता है, यदा जीवते है ना, घृतम ऋणम पीवते। तो चीजें बड़ी अच्छी लगी। और लेकिन लास्ट में ये हुआ कि जैसे कि आधा गिलास आपने छीन लिया। क्योंकि ये तो है ना, धारा प्रवाह बन चुका था कि इस पे और भी 2-2.5 घंटे लगा सकते थे, चल सकता था। तो मैं तो ये कहूंगा कि शिवा मैडम से कि आप इनके एक लेक्चर सीरीज आप कंटिन्यू करें ताकि ये जरूर हम आगे जरूर, भी चल अगर सके। क्योंकि मेरा मानना है कि एक टेक्निकल इंजीनियर भी अगर लिटरेचर से नहीं जुड़ा हुआ है तो वो अपनी चीजों को बड़ी गंभीरता के साथ नहीं कह सकता। और वो आपकी सुन के ये साउंड भी हुआ कि बीइंग ए टेक्निकली हम एक्सपर्ट हैं, लेकिन जब हम क्लासरूम में अगर नॉर्मली डिलीवर करते हैं बिना लिटरेचर के तो खालीपन सा नजर आता है, आपकी बातों में वजन नहीं आएगा। तो बड़ा जरूरी है कि इंजीनियर का लिटरेचर के साथ जुड़ा होना, ताकि वो अपनी बातों को बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से कह पाए। तो मुझे आपका लेक्चर वास्तव में शानदार लगा और मैं चाहूंगा कि और आपके सुनने को और मौके दोबारा मिले। तो सीमा मैडम, बड़ी थैंक यू वेरी मच, आपने इस तरह का शानदार लेक्चर अरेंज किया। आई एम सो हैप्पी एंड ऑब्लाइज्ड कि सर आए और सर ने हमारे साथ ये सारा ज्ञान डिस्कस किया, साझा किया। आई एम वेरी थैंकफुल टू मैं सर। अवॉइड करता हूँ इस तरह से इंटरप्ट करने को कहीं, लेकिन नहीं सर, आपके थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग। इट वाज सो वंडरफुल टू लिसन टू यू सर। थैंक यू पंकज। Thank you so much. I would like to rush. So Yes, really, sir. I hate Please. to say this. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Bye-bye. Thank you everyone for being here and being such a pleasant audience. Thank you everyone. Thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you everyone. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. I love you. Thank you so much, everyone. Thank you. Yeah. Bye-bye. See you. Bye-bye, ma'am. Bye-bye, ma'am. Thank you, ma'am. Thanks a lot. Thank you, Gurveen sir, for coming. Thank you. Sarthak, I think we can end the meeting. Thank you so much. Thank you so much for all the support that you lent me today. Thank you. Yes, please do. Thank you, beta. Thanks a lot.